Good morning, students. In DSC 202, which is British literature, what we were doing, we were going through the Merchant of Venice. मैंने कल भी आपको बताया था. I wanted to make you read line to line. I just wanted you to go through first scene of first act, but it's not possible because it's quite tough for me, even tough for you to understand the things, क्योंकि language जो है वो different. So what did we do? We finished first act yesterday. 3 scenes I've discussed with you. First of the opening scene, it deals with Venice, where Gratiano is there, and Celario, Selenio, and Bassanio and Antonio, they are all of them, they are there. Antonio is looking worried and he doesn't know the cause of his worries. His friends say that he is worried about his business. Fine. Then suddenly Bassanio comes and he says that I need some money, but Antonio is empty handed right now because he has invested each and everything of his, and his entire savings, or we can say each and everything is of Antonio is invested for business. और वो business कहाँ है? वो ships में उसका सामान जो है it's moving here and there. Then we are told about Bassanio and Portia love affair. We come to know that Bassanio is in love with Portia and he is planning to go to Belmont. The second scene is laid at Belmont, where we come to know about casket का जो एपिसोड है, that 3 caskets have been left by Portia's father. He wanted, because he is no more, he wanted that his daughter should be married to a person who really loves and cares for her. 3 casket है, one is golden, other one is silver, and next one is of lead. और उन 3 caskets में से एक में उसकी जो है वो फोटो पड़ी है पोर्शिया की. जो एग्जैक्ट कैस्केट को पिक करेगा, he will be the husband of Portia, or he will be able to marry Portia. Portia is a bit low, she is feeling a bit low because somewhere she is a little bit attracted towards Bassanio, बट उसको एक चीज़ के लिए वो बिल्कुल रेडी है, बिकॉज व्हाट इज शी सेइंग दैट व्हाटसएवर माय फादर हैज़ लेफ्ट, व्हाटसएवर द कंडीशन माय फादर हैज़ लीड फॉर माय मैरिज, आई विल जस्ट फॉलो दैट. So whosoever will be able to find out the right casket, I'll marry him. And she is somewhere, she is confident of Bassanio, क्योंकि उसको लगता है कि he will be able to select the right casket. So we are told about some of the people who just visited, princes who are there, kings who are there, but they failed to find out the right casket. And then we come to know that Portia has a very close friend and a female who attends her. She is Nerissa, and both of them, they have very good understanding. In general, we have seen that in palaces, when princes are there, they have at least one female with them, with whom they share each and everything. So same is the case with Nerissa here. So in scene 3, what happens, that we are again taken back to Bassanio, who's Venice, where Bassanio and Antonio, they are planning to get money, and Antonio doesn't have any money, so he says that I want to help my friend. मैंने आपको कल भी बताया था that he is that very person who is ready to do each and everything for his friendship का जो रोल मॉडल है उसमें Antonio है. And he says that I don't have money, और मेरा पैसा आते टाइम लगेगा, तो what will we do? We'll take money from Shylock. एक अलग another character introduce हुआ है इसमें. Who is Shylock? Shylock is a Jew, and he what does he do? He is a money lender. He takes high rate of interest from people. वो लोगों की प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करता है, उनकी ज्वेलरी मॉर्टगेज करता है, और इतना ज़्यादा हाई इंटरेस्ट लगाता है कि दे आर नॉट एबल टू पे, और फिर वो रिटर्न उनको नहीं करता है. ऑन द अदर हैंड एंटोनियो ऑल्सो लेंड्स मनी, बट उसकी कंडीशन क्या होती है कि वेन एवर यूल हैव यूल जस्ट रिटर्न, और वो अगर इंटरेस्ट लेता भी है वो लोएस्ट रेट इंटरेस्ट लेता है. तो शायलोक के लिए जो एंटोनियो है वो एक कॉम्पिटिटर है. नाउ एंटोनियो इज इन द क्लचेज ऑफ शायलोक, सो शायलोक इज प्लानिंग व्हाट टू डू. बिफोर ऑल दैट बेसिनियो जो है उनको एंटोनियो शायलोक को बोलता है कि यू विल टेक फूड विद अस. शायलोक डजंट वांट टू गो विद देम बिकॉज ही is a non-Christian and he doesn't want to sit with Christians. And ultimately what does he decide? He says that and I'll give you money. Antonio को क्या कहता है? I'll give you money, लेकिन if you won't be able to return my 3,000 ducats within 3 months, so what will I do? I'll take 1 pound of flesh from any part of your body. And Antonio agrees for this, क्योंकि उसको पता है 3 महीने तो बहुत लंबी वाली गेम है, उसको तो पहले ही उसका अमाउंट आ जाएगा, and he'll return Shylock's money. So दे साइन अ बॉन्ड, एक बॉन्ड को वो साइन करते हैं, एंड ईच एंड एवरीथिंग इज मेड क्लियर देयर. एंड एंटोनियो इज़ वेरी मच कॉन्फिडेंट कि इसकी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, एंड आई विल रिटर्न ईच एंड एवरी पेनी विद इन टाइम. सो in Act 2 Scene 1, what happens? We are told about various princes who visit Portia to be with her, क्योंकि वो हेरस भी है ना, उसकी जो बेलमोंट की जो एरिया है, शी इज़ अ हेरस ऑफ बेलमोंट, तो वो स्टेट भी तो मिलने वाला है साथ में. पोर्शिया अगर मिलेगी, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन उसके साथ में जो है वो प्रॉपर्टी भी तो मिलने वाली है. सो एट बेलमोंट व्हाट हैपन्स दैट
प्रिंस ऑफ मोरक्को हैज़ रीच्ड। मैंने आपको एक्ट 1 के सीन 2 में बताया था कि प्रिंस ऑफ मोरक्को हैज़ रीच्ड, अराइवल हैज़ बीन अनाउंस्ड, बट पोर्शिया इज़ लिटिल अनविलिंग। लेकिन क्योंकि वो तंग हो चुके हैं सारे कामों से, सो ही हैज़ रीच्ड एंड व्हाट ही सेज दैट पोर्शिया talks to him, he says that I am not so fair complexion, but I'll love you from the core of my heart, and I am 100% confident that I'll change your thinking about me. I'll select the right casket and you'll be my wife. She says that all fine. So he agrees that if I'll select the wrong casket, then I won't say even a single word, and I won't think of being with you ever in my life. दोबारा वापस भी नहीं आऊँगा. He is so clear hearted. So condition was, it was very tough condition that 3 caskets were there. Some lines were written as guidelines for the lovers or for the suitors. उनको रीड करके अंडरस्टैंड करके उनको कैस्केट खोलने थे. तो एक कैस्केट खोलना था और अदर जो 2 रह जाने थे उनमें से अगर किसी में फ़ोटो होती तो जो कैस्केट खोला था तो रिज़ल्ट तो वही बताने वाला था. So what did he do? He referred to himself as a brave soldier and he said that I'll just select the correct casket now. If wrong casket is there, then I'll be back. Then one scene is laid in your Belmont, other one is laid in Venice. इस तरह से पैरेलल स्टोरी आपकी चल रही है. Again we are taken to Venice where Lancelot Gobbo, who is a servant of Shylock, who later on becomes associated with Bassanio के साथ वो associate होता है. ही इज़ वेरी मच डिससेटिस्फाइड विद शार्लॉक. वो शार्लॉक से बहुत ज़्यादा अनॉयड है. क्यों? आपको शार्लॉक की पर्सनैलिटी का इन जनरल पता चल चुका है. विच टाइप ऑफ फेलो इज़ ही जस्ट बिलीव्स इन एक्सप्लॉइटिंग अदर्स. वो सबको परेशान करता है. हिज डॉटर इज़ देयर, ही इज़ इवन शी डजंट लव हिम बिकॉज ऑफ हिज टेंडेंसी. ही इज़ इनह्यूमैनिटेरियन. वो अमानवीय व्यवहार करता है. एंड ही डजंट डील प्रॉपरली विद पुअर पीपल, even with his servants, even with his family. उसकी डील जो है it is not good. So what happens? एक soliloquy है. Soliloquy, I told you yesterday also that when the character is left alone on stage and what he reveals his or she reveals her real identity, अपने सोच को बताता है. जैसे मूवीज़ में आपने इन जनरल देखा होगा कि what happens मूवीज़ में कि एक कैरेक्टर है which is too good, amazingly good character is there. Suppose कोई एक कैरेक्टर है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अपनी ड्यूटीज़ भी कर रहा है, लेकिन व्हेन लेफ्ट अलोन उसकी जो प्लान्स हैं वो उसके फेशियल एक्सप्रेशन से सामने आती हैं और वो बताता है कि मैंने अल्टीमेटली सपोज किसी का मर्डर करना है या किसी से बदला लेना है. देन वी कम टू नो दैट दिस वेरी पर्सन इज़ ए विलियन, एक्चुअली नॉट अ पॉजिटिव कैरेक्टर. तो वही चीज़ जो है अब फिर से शार्लॉक की एक soliloquy है. पहले भी एक soliloquy थी, सेकेंड सीन में थी वो, वेयर सीन सेकेंड या थर्ड सीन में वो थी. तो वेयर वी वर टोल्ड अबाउट हिज रियलिटी. थर्ड सीन था शायद फर्स्ट एक्ट का. वो वहाँ पे उसने रिवील किया था कि हाउ मच जेलिस ही फील्स ऑफ एंटोनियो के बारे में, वो क्या सोचता है. अगेन देयर इज अ soliloquy. सो विच इज़ ऑफ लैंसलॉट गॉबो की ये soliloquy है. ही इज़ प्लानिंग टू लीव whom? The fellow named Shylock. Shylock को छोड़ के he is willing to go to Bassanio and he is he is having keen desire to be with him. उसको लगता है कि Shylock is such a useless fellow, inhuman fellow, that it is useless to be with him. So he is planning to go and work with Bassanio के पास वो जाना चाहता है. He is very kind. Then there is old Gobbo जो लैंसलॉट का फादर है. ही रीचेस देयर एंड लैंसलॉट मेक्स फन. ही जस्ट प्लेज ट्रिक्स विद हिज फादर. ही मेक्स हिम लाफ. ही मेक्स हिज फादर लाफ. ही वांट्स टू शेयर रियलिटी विद हिज फादर दैट आई डोंट वांट टू बी विद शार्लॉक, आई वांट टू गो टू बेसिनियो. लेकिन पहले उसको लगता है कि लेट मी मेक माई फादर फील गुड. ही behaves like a joker and he says that his father is a very poor person and his father is blind also. He says that his son is no more. Then suddenly he reveals the reality when his father recognizes him. तो reality reveal कर देता है. Then he has brought a gift for his father also. Then Lancelot जो है क्या करता है, Bassanio उसको बोलता है कि we need to give this gift to Bassanio, क्योंकि Lancelot ने तो बताना ही था अपने फादर को कि that I am planning to go to Bassanio. So he is planning to go to Bassanio. So what happens after that? That Bassanio and Lancelot
they are seen together. Now Bassanio is ready to go to Belmont because he wants to marry the heiress. What is the name of hers? Her name is Portia. So Gratiano is willing to go with him, then Lancelot is willing to go with him. They are his true supporters, they are his true followers, they are his friends, and Bassanio agrees to take him with him, that Gratiano would keep quiet. He won't behave like a chatterbox, he won't speak a lot, he will just shut his mouth, he won't speak too much, and take responsibility properly. Gratiano ensures him that he won't say even a single word which would spoil the relationship of Bassanio and Portia. Bassanio और Portia के relationship को spoil करने वाला वो कुछ नहीं बोलेगा, because आपने सुना होगा when we speak a lot then at times we speak useless things, and when we speak useless things they spoil many good relations. So they agree, and they want to enjoy at night. all these things happen at night. शाम को ही जो है वो लैंसलॉट का डिसीजन होता है कि आई गो टू बेसिनियो. बेसिनियो के साथ वो जो बेसिनियो के पास वो जाता है, वहाँ वो लोग बातचीत करते हैं, और फाइनली जो है वो जो बेसिनियो, लैंसलॉट एंड ग्रेशियानो दे प्लान टू बी टुगेदर, और ग्रेशियानो को वो साथ ले जाने के लिए तैयार भी हो जाता है कि कंडीशन सिर्फ एक है कि मेरे और पोर्शिया के बीच में तुम आने की कोशिश नहीं करोगे. देन इन एक्ट 2 scene 3 sorry, Lancelot says goodbye to Jessica. Who is Jessica? As I have sent you the flow chart of the play, Jessica is the daughter of Shylock की वो daughter है. She is very much frustrated, very much annoyed with her father. She doesn't want to be with him, but she is put in a situation where she has to live with his father. She wants to go. She is very much sad because Shylock is leaving. So she feels that she says that I don't want to be with Shylock. वो Lancelot के जाने पे she is very sad. She doesn't want that Lancelot should leave, क्योंकि Lancelot के साथ she is able to communicate positively, और Shylock के साथ she doesn't feel comfortable. Father के साथ वो comfortable नहीं है, and she feels that if Lancelot is there it would have been good for her, लेकिन now he is going to, she'll have to manage the things. So Jessica has lost her mother earlier, and Lancelot जो है he is given a golden coin. वो लड़की जो है जेसिका, ही गिव्स लैंसलॉट अ गोल्डन कॉइन एंड गिव्स अ लेटर फॉर लोरेंजो. अगर आपने ढंग से फ्लो चार्ट देखा होगा, देयर इज़ अ लव अफेयर बिटवीन जेसिका एंड लोरेंजो, एंड लोरेंजो और जेसिका दे एलोप अल्टीमेटली, एंड शी गिव्स हिम अ लेटर. लोरेंजो इज़ विद बेसिनियो. अब पार्टी कहाँ हो रही है? बेसिनियो के घर पे हो रही है, जहाँ उसके सारे लोग इकट्ठे हैं, बिकॉज ही इज़ प्लानिंग टू गो टू बेलमोंट. उसे बेलमोंट के लिए निकलना है, तो दे हैव अरेंज्ड पार्टी फॉर एन्जॉयमेंट. सो लोरेंजो also loves Jessica, and Shylock is against. Actually he doesn't know all this, but he is against all Christians. You know that he exploits the Christians. How does he exploit? उनको वो पैसे उधार देता है और चीज़ें mortgage करके he doesn't return their things well. So he doesn't know that Jessica is in love with a with a Christian. उसको ये पता नहीं है अभी तक, but Lancelot tells the audience that Jessica is in love with whom? She is in love with Lorenzo. So Jessica feels ashamed of being called as the daughter of Shylock, because उसकी इतनी नेगेटिविटी है उसके मन में, डॉटर के मन में, कि she doesn't want to be associated with her father. So she says that she feels that whenever she'll be the wife of Lorenzo, she'll get rid of all these tensions, care, worries, and above all of Shylock, her father also. So Lancelot doesn't want to be detached. So Lancelot doesn't want to be detached from Jessica because her deal is amazingly good. लेकिन उसको तो अब जाना पड़ेगा Lancelot को, because he has decided to be with Bassanio. लेकिन Jessica क्या करती है? She sends a letter to Lorenzo because she wants to be with him. वो उसके साथ रहना चाहती है. Then where we next we are taken to scene 4, where Gratiano, Lorenzo, Solenio and all these friends, they are together in Venice. Venice में वो लोग इकट्ठा हैं, and they plan that how will we move ahead. अब अगली planning कैसे होनी है, क्योंकि पैसे का इंतज़ाम तो हो गया है. Now how they plan or move ahead to win the hand of Portia. Suddenly Gobbo comes with
a letter for Lorenzo, which is written by Jessica herself. Lorenzo feels too good when he receives that very letter. Lorenzo feels so good that Shylock is at with Bassanio right now. वो क्या चल रहा है, एक तरफ चल रही है पार्टी शाइलॉक बेसिनियो के घर में, जहाँ शाइलॉक भी पार्टी के लिए अनविलिंगली आया है, लेकिन उसकी कंडीशन पूरी हुई है तो वो आया है. Suddenly Lancelot he gives a letter to Lancelot that you have to give this letter to Jessica, and he says that I have got a person who will deliver letters here and there. And Lorenzo in the evening decides to meet at Greciano's place, and only Lorenzo and Greciano, when they are left alone, they understand what is being said by Jessica. उस Jessica के letter का वो अच्छा सा मतलब निकालते हैं. They read that very message where it was written that take me away from my father's house as soon as possible. I have some gold and money with me that would be sufficient for us, and I am ready to go with you. Means she wants to run away with whom? Lorenzo के साथ वो भागने के लिए रेडी है, because she is very much frustrated because of the behavior of her father. Lorenzo says that if Jessica is harmed somehow, then it would be because of him only. कि जेसिका ने जो डिसीजन लिया है, अब अगर उसका कोई नुकसान होगा तो आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, बिकॉज शी इज़ द डॉटर ऑफ शाइलॉक हु इज़ हु इज़ नॉट ट्रस्ट वर्दी. ही इज़ अ फेथलेस जू की वो बेटी है, तो बट शी इज़ ट्रूली इन लव विद मी. सो लोरेंजो एंड जेसिका दे आर रेडी टू रन अवे फ्रॉम जेसिकाज फादर्स प्लेस. वो वहाँ से भागने के लिए बिल्कुल रेडी हैं. सो व्हाट डिड वी डू? वी हैव गॉन थ्रू 4 scenes of Act 2. Rest of the thing we'll do tomorrow or whenever our next lecture would be, because we go through these books for 2 days only. Rest of the lecture will continue next week. Till then what you will have to do, you will just go through the content, इसको understand करोगे, स्टोरी को रीड करोगे और साथ में आप इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना शुरू करोगे. टुमारो आई विल सेंड यू क्वेश्चंस ऑल्सो. आप साथ में जो है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते रहोगे. जैसे ओपनिंग सीन का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, तो आप ओपनिंग सीन का करोगे. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आई विल सेंड यू लेटर ऑन. सो गुड डे.